Hello students, this is our third video in the International Relations UGC NET PYQ video series. In this video series, we will be covering all the PYQs asked by UGC NET from 2014 up till June 2025 for each topic. So in this lecture, we will be covering all the PYQs related to concepts in international relations. Okay, so this is the part 1 of the video and we'll be dealing with states, state systems and non-state actors. So the first question which was asked in December 2015 was, according to KJ Holstein, which one of the following is not a feature of the contemporary state system. तो इसमें 4 options दिए हैं and we have to find the wrong one. The rise in the number and types of states. So this is correct. This is a feature of contemporary state system. Next is the great potential for destruction by those who possess nuclear weapons and modern delivery systems. ठीक है, this is also a correct statement. ठीक है, there is indeed a great potential for destruction due to the rise of nuclear weapons, nuclear proliferation की वजह से. The third statement is the predominant position of influence that has been achieved by the three essentially non-European states, Russia, China and USA. This is also true. हमें पता है कि today we have a multipolar world wherein China, Russia as well as USA are the three countries which are forming multiple poles in the world. Last statement है, the large number of states are keen to join political and economic alliances. तो यहाँ keen to join लिखा है. Even though large number of states do join political and economic alliances, however, most of them see that as a compromise. They are not keen to join any alliance. Compromise होता है ये. Because once you join an alliance, तो आपका sovereignty is affected. ठीक है, sovereignty is either reduced or affected in a negative manner. तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि that while states do form alliances, a universal keenness to join them is not a defining characteristic of the system itself, unlike the other structural realities. ठीक है, so the fourth statement will be wrong. Next question July 2016 का है. This is an assertion and reasoning question. So the assertion given here is American foreign policy supported the democratic regimes. This is correct because American foreign policy was, even during Cold War, they were slightly capitalistic, है ना. Capitalistic and liberalism follow करने वाले थे, है ना वो लोग. और इन कंट्रीज में जनरली डेमोक्रेसी एग्जिस्ट्स. वेराज द यूएसएसआर वाला जो वर्ल्ड है, सोशलिस्ट कंट्रीज जो हैं, दे जनरली हैव या तो सिंगल पार्टी सिस्टम रहता है या कोई अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा. जैसे अभी आप चाइना में देखेंगे, देयर प्रीमियर जी जिनपिंग, ही विल स्टे द प्रेसिडेंट, आई थिंक द प्रीमियर ऑफ चाइना थ्रू आउट लाइफ. ठीक है, सो इन कैपिटलिस्टिक और लिबरल वर्ल्ड में democratic regimes are the ones which are favored, and American foreign policy had also supported democratic regimes. Next reason क्या दिया है, at times the military systems were also supported by America. So this is also true. America, in order to further its own interests, often supported authoritarian regimes as well. तो आप देखेंगे अफ्रीका में, and even in Pakistan, our neighbor Pakistan also, वहाँ पे the military regime of Pervez Musharraf was supported by America. ठीक है, so both of these statements are correct. However,
दिस इज नॉट अ रीजन फॉर द असर्शन, ठीक है, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है. सो द सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट. बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2016 का है. The modern state system with its territorial sovereignty came into existence first in Europe in the wake of which of the following? तो हमें दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमें पता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम का ओरिजिन हुआ था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से, है ना. सो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कब हुआ था? दिस टुक प्लेस आफ्टर द 30 years वॉर इन यूरोप. यूरोप में देर अराउंड 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया was signed, which basically ensured that the countries will I'm sorry there will be different states in the world, and each of these states will have exclusive sovereignty over their own territory. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2017 का है. The US stopped cultivating ties with the Taliban regime in Afghanistan after which of the following? So I'll just read the options. 9/11 attacks in USA, nahi, this is wrong. Attacks on US embassy in Kenya and Tanzania, this is correct. Attacks on US military mission headquarters in Riyadh, nahi, इसके बाद भी नहीं हुआ था. Failure of talks on gas pipeline through Afghanistan, this is also wrong. So the correct answer is the second option. तो हुआ क्या था? Embassy bombings took place in 1998. ठीक है. So that was when USA had officially disengaged with the Taliban and started imposing sanctions on them. ठीक है. After 9/11 attacks, तब उन्होंने स्टार्ट किया था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम. इसको हम दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज द ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म. ठीक है. दिस वॉज कैरिड आउट बाय यूएसए टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड, और ये हुआ था 9/11 के बाद स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2018 का है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 main criteria set out by the 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of the States. तो ठीक है, 1933 का जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द स्टेट्स, उसमें देयर वर 4 essential criteria for statehood. ठीक है. सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दोज. फर्स्ट वन वाज अ परमानेंट पॉपुलेशन. ठीक है. तो कोई भी रीजन को अगर हमें स्टेट डिक्लेयर करना है तो दे शुड हैव अ दैट स्टेट शुड हैव अ परमानेंट पॉपुलेशन. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट था अ डिफाइंड टेरिटरी. तो यही है, एवरी स्टेट शुड हैव अ डिफाइंड टेरिटरी. उसके बाद में दे शुड हैव अ गवर्नमेंट. ठीक है. सो देयर शुड बी अ गवर्निंग अथॉरिटी इन अ रीजन, तभी उसको हम स्टेट बोलेंगे. नेक्स्ट है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस. तो ये वही फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि these states should have foreign policy apparatus, and that is one of the main criteria for statehood. ठीक है. तो ये 4 ही criteria से. So according to that, इस question में the third option will be the one which is not a main criteria set out by the Montevideo Convention. ठीक है. Next question है, this is a match the following question. This was asked in December 2019. So we have to match the conventions with their respective years. ठीक है. So first of all, we'll start with the Tokyo Convention. So Tokyo Convention was a convention on offences and certain other acts committed on board aircraft. ठीक है. तो ये एयरक्राफ्ट पे जो भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए दिस टोक्यो कन्वेंशन वो साइंड. तो लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल ऑफेंसेस की बात नहीं हो रही थी. ये दिस वाज बेसिकली बॉट इनटू फोर्स इन ऑर्डर टू डील टैकल टेररिज्म. ठीक है. ये जो सारे कन्वेंशंस हैं ना, दे आर बेसिकली एम्ड एट टैकलिंग
terrorism. ठीक है, so the Tokyo Convention was signed in 1963. So next one is the Hague Convention. So the Hague Convention is regarding the convention for suppression of unlawful seizure of aircraft. तो हाईजैक बोलते हैं ना हम लोग कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए दिस हेग कन्वेंशन वाज फॉर्म। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, एच हाईजैक और एच हेग। ठीक है, सो दिस वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन 1970। ठीक है, इसके बाद में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग। सो दिस वाज ब्रॉट इनटू फेस इन 1997। ठीक है, दिस वाज ब्रॉट इनटू फोर्स इन 1997। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। दिस केम इनटू फोर्स इन 1999। ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Please also follow our Telegram channel where I have uploaded all the PDFs for the different lectures. And please also comment on our videos regarding any content suggestions or if you find our videos helpful. Thank you.